So hello everyone, I'm Akshay Jadhav from Raftech Solutions. Hello dignitaries and all participants. So we are Raftech Solutions. We promote, as you know, India have 11,089 kilometers of coastline. 9 states and 4 UTs have the coastlines of that. So huge potential है, but अभी तक उतना यूटिलाइज नहीं हुआ है सीवीड कल्टीवेशन में बिकॉज ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेडिशन नहीं है. But hardly Tamil Nadu, Gujarat, Lakshadweep, and few part of Andaman are mainly cultivating rigorously. But like states like Gujarat, like Maharashtra, Karnataka, and Goa, then Andhra, में अभी भी उतना potential होके भी use नहीं हो रहा है. So we are providing them training, awareness, and assured buyback income through the seaweed cultivation as an alternative income source. We are manufacturing products out of it. So 23.53 billion industry globally. China contributes mostly as a first ranker, 53% of the global production. Then Indonesia. India have hardly less than 1% contributing into this. So we have that huge coastline. We can utilize this as one of the economic role. So what are the challenges we are facing into fisheries industries due to climate change, wave actions, and etc. like illegal fishing, but this can be one of the good alternative income source for fishermen because they are solely dependent on fishing only. So it is a climate positive, naturally carbon sequestrator है. Then biodiversity को भी maintain करने के लिए help करता है, as well as income source के लिए भी हेल्पफुल है, सस्टेनेबल यूजफुल है, लाइक सॉइल रीजनरेट करने के लिए एंड प्लांट ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल होता है. देन दिस इज सिंपल मेथड ऑफ कल्टीवेशन यू कैन यूज फॉर कपा फाइकस एंड ग्रासियल एरिया कल्टीवेशन इजीली. जस्ट राफ्ट इंस्टॉल करो एंड उस पर सीडलिंग डालो. नो नीड ऑफ एनी फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स टू मेंटेन एंड कल्टीवेट दिस. परमिशंस में भी कभी कभी थोड़े से प्रॉब्लम आते हैं जहाँ पे लाइक न्यूअर स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में, तो वो अगर सॉर्ट हो सके तो डेफिनेटली एंड गवर्नमेंट ने उसमें इंटरवेंशन किया तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल टू बूस्ट द सीवीड कल्टीवेशन ऑल ओवर द स्टेट्स. देन सप्लाई चेन गैप्स ऑलरेडी मेंशन्ड आई, लाइक ट्रांसपोर्टेशंस में जो लॉसेस होते हैं उसमें, एंड मार्केट लिंकेजेस जो कल्टिवेटर्स हैं उनको बायर्स नहीं मिल रहे, बायर्स को कल्टिवेटर्स नहीं मिल रहे, एंड मिल रहे तो फिर उसमें क्वालिटी इश्यूज है. तो वो अगर हम लोग गैप सॉर्ट कर सके तो डेफिनेटली इट विल बी अ मेजर इंडस्ट्री. थैंक यू.